Good morning, all. Yesterday, we discussed about the financial planning and the twin objective of financial planning. So, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. What is financial planning? Financial planning is the preparation of financial blueprint of organization's future operations. यानी हम बनाते हैं एक blueprint कि फ्यूचर में बिजनेस ऑपरेशंस क्या क्या करेंगे फ्यूचर में, उसका पूरा स्टेटमेंट बनता है. दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग. Now, what is the twin objective of financial planning? The twin objective is to see that funds are available at right time and in right quantity. Now, why is this financial planning so important in any business? Financial planning, finance is the lifeblood of any business. And both the situation, that is shortage of fund as well as surplus funds, are, you can say, very injurious to the financial health of any enterprise. That is, funds should be optimum amount of funds should be available, not more, not less. That is financial planning. And proper financial planning ensures that enough funds are available in right quantity and at right time for business smooth operations, you can say. Now, what is the importance of financial planning? The first importance of financial planning is it helps the company to prepare for the future. That is, it forecasts about the future. It tries to forecast what may happen in future in different business situations. I'll explain this with the help of example. Suppose a company predicts a growth of sales to be 20%, कि सेल्स में ग्रोथ जो होगी वो 20% होगी. बट ये तो प्रेडिक्शन है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है. इट कैन बी मोर देन 20%, दैट इज 30%, एंड इट कैन बी लेस देन 20%, दैट इज 10%. तो अगर सपोज ज़्यादा होती है या कम होती है तो मेनी आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस शैल बी डिफरेंट इन दिस थ्री सिचुएशंस. अगर ज़्यादा होती है तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, कम होती है तो एक्सपेंसेस कम भी हो जाएंगे. सो फाइनेंशियल प्लानिंग प्रिपेयर्स ए ब्लूप्रिंट ऑफ दीज थ्री सिचुएशंस इन एडवांस. मतलब प्रेडिक्ट तो करती है 20% होगा, पर उससे भी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी. सो इट कीप्स रेडी द फाइनेंशियल प्लान्स रेडी फॉर दिस थ्री सिचुएशंस. कि अगर ज़्यादा भी हो गया तो भी फाइनेंशियल प्लान रेडी, एकदम फटाफट बनाना नहीं उसी टाइम. और अगर कम भी हो गया तो फाइनेंशियल प्लान रेडी है. तो क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रिपेयर्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ these three situations in advance, which helps the management in deciding what must be done in each of these situations. That is, it keeps ready the financial planning of different situations. इसका मतलब ये हुआ कि it keeps the financial planning ready for different business situations. Now the next point is it avoids shocks and surprises. That is, financial planning helps in avoiding shocks and surprises by estimating the funds requirement beforehand. अगर हम पहले से ही फंड्स का एस्टिमेट कर लेंगे कि कितना फंड्स हमें चाहिए, तो इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस. नाउ द थर्ड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन. दैट इज, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग with different departments, sales and production departments, that is by providing clear policies and procedure. इसमें लिखेंगे हम पॉइंट जो है, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. दैट इज, prior allocation of funds among different departments such as production and marketing will help in coordinating among them. So that is coordination with different departments. अगर easy शब्दों में कहूँ, it helps in coordinating with different departments. Now the fourth point is it helps in optimum utilization of resources. How? Financial planning ensures that right amount of funds are available and in right quantity. So it helps in avoiding wastage of resources. Or you can say it helps in optimum utilization of resources by estimating how much quantity of fund is required and at what time it is required. Next point is it tries to link present with the future. That is, it bridges the gap between present and future. Next point, it tries to link investment with financing decision. Now how? पहले तो ये डिसाइड करेगा कि कितने प्रपोर्शन में हमें फंड्स इक्विटी से लेना है और कितने प्रपोर्शन में डेट से, और उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है.
Therefore, we say it tries to link investment with financing decision. And the last point is एक तरह का कंट्रोल आ गया जो हमने पढ़ा था कंट्रोलिंग, बट इसको बोलेंगे फाइनेंशियल कंट्रोल. हाउ? फाइनेंशियल प्लानिंग सर्व as a basis for financial control by comparing the actual result with the set standards to find out deviations and take corrective actions. बहुत आसान पॉइंट है. पहला पॉइंट वापस रिपीट कर रही हूं. It tries to forecast what may happen in future under different business situations. Forecasting under different business situation. For example, if growth is 20%, growth of sales is 20%, then financial plan is prepared for that situation. It can be more or less, that is, it can be 30% or 10%, then financial planning is prepared for different business situations. The next point is it helps in avoiding shocks and surprises by preparing business for the future. Next is it helps in coordinating with different departments. Easy करके बता रही हूँ बहुत. Then it helps in optimum utilization of resources by estimating how much funds are required, that is, in what quantity and at what time. So it helps in optimum utilization of resources. उसके बाद पॉइंट आ गया, लिंक वाले दो पॉइंट आ गए, that is fifth and sixth. It tries to link present with the future. 6 पॉइंट हो जाएगा, it tries to link investment with financing decision, और लास्ट वाला फाइनेंशियल कंट्रोल हो जाएगा जो कि 7th पॉइंट है. That is, it serves as a basis for financial control by comparing the actual work with the set standards to find out deviation and take corrective actions. So this is about the importance of financial planning. It is one of the easiest topic of this chapter, जिसमें हमने फ्यूचर की सिचुएशंस प्रेडिक्ट की और उन सिचुएशंस के फाइनेंशियल प्लान, 3 ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान बना लिए. उसके बाद हमने क्योंकि फाइनेंशियल एस्टिमेट कितनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट वो एस्टिमेट कर लिया, इसलिए अवॉइड कर लिया शॉक्स एंड सरप्राइजेस को. और एस्टिमेशन फाइनेंशियल प्लान में हम एस्टिमेट क्योंकि फंड्स को कर लेते हैं, तो इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. It tries to link present with the future. Then it tries to link investment with financing decision, and it acts as a basis for control by comparing the actual work with the set standards to find out deviation and take corrective action. So these are the 7 points for importance of financial planning. They're the most easiest points of this chapter. Please revise it, make the notes. You will get it. Thank you and God bless.